Hello students, welcome to online education of Ashadeep International School, Standard 3rd. Subject is Math, Unit 4, Long and Short. Continue with that unit and part number 4. Here we are learn about the Unit 4, Long and Short, part 4. Part 1, 2 and 3 we are learn in the previous session. In this session we are learn about the part 4. In this session we are see that trip to Agra, one of the trip of Agra, right? Here are given that Mari and Bichung are going with their family to Agra. वो लोग अपनी फैमिली के साथ आगरा जा रहे हैं. दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन. वो लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतरे एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल. और वहाँ से उन लोगों ने ताजमहल जाने के लिए रिक्शा हायर की. आफ्टर 3 आवर दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट राइट. सी आफ्टर 3 आवर वो लोग क्या कर रहे हैं, आगरा फोर्ट पे जा रहे हैं. अगेन इन रिक्शा, और वापस किस में जा रहे हैं वो लोग, रिक्शा में, राइट. सी नेक्स्ट इज इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी. वो आफ्टरनून में बस थ्रू फतेहपुर सीकरी को निकल रहे हैं, राइट. सी इन दिस मैप यू कैन सी दैट हियर बाबरपुर फॉरेस्ट, आगरा फोर्ट, ताजमहल, रिवर यमुना, ताज फॉरेस्ट, and here are the railway station, and here are a Fatehpur Sikri. And here see in this map you can see that the railway station is denoted like that line, okay. So that are the railway station. Clear? Okay, continue with that trip of Agra. We are see that now look at the distance between this place. 4 kilometers we write km, means that हम किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, km. See in this map you can see that Babarpur forest, Agra fort, Fatehpur Sikri, Taj Mahal, which one is nearer to denoted place, right? See, first of all asking that Agra Kent railway station to Taj Mahal is equal to 5 kilometer, means Agra Kent से ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, राइट. नेक्स्ट इज दैट हियर अनदर ताजमहल टू आगरा फोर्ट, मीन्स ताजमहल से आगरा फोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर. ताजमहल टू आगरा फोर्ट, सी हियर रेलवे स्टेशन टू ताजमहल डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर. सो हियर ताजमहल टू आगरा फोर्ट डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर बिकॉज ताजमहल टू आगरा Kent railway station distance is a bigger than the Agra fort to Taj Mahal distance, right? Clear? See in the map clearly we are see the distance between the Taj Mahal to railway station and Agra fort to Taj Mahal distance, right? Next is that Agra fort to Fatehpur Sikri is equal to 40 kilometer, means आगरा फोर्ट जहाँ पे है, आगरा फोर्ट से लेके फतेहपुर सिकरी का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर. सी इन दिस मैप वी आर सीइंग द स्मॉल पाथ, राइट, बट इन द रियलिटी द डिस्टेंस आर सो मच बिगर. सो इट्स डिनोटेड 40 किलोमीटर, राइट. 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर. नेक्स्ट इज दैट नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप. अभी मैप पे से हमें जो पूछा है वो फाइंड करना है, राइट. Showing in the map. First one is that which is further from Agra railway station, which is further from Agra Kent railway station, Taj Mahal और फतेहपुर सिकरी. मीन्स रेलवे स्टेशन से क्या दूर है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से क्या दूर है, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी दोनों में से कौन सा दूर हो जाएगा. आंसर, anyone guess the answer? Answer is that फतेहपुर सिकरी इज फर्दर. सबसे दूरी पे क्या होगा, फतेहपुर सिकरी, राइट. कंटिन्यू विद दैट. Another thing is see again the map, which of these is nearer to the railway line. इसमें से कौन है जो रेलवे लाइन से नज़दीक है. फर्स्ट वन बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट. ताज फॉरेस्ट रेलवे लाइन से नज़दीक है या बाबरपुर फॉरेस्ट रेलवे लाइन से नज़दीक है. आंसर इज़ दैट बाबरपुर फॉरेस्ट, राइट. सी
Babarpur forest are here. It's nearer to the railway line, and Taj forest are here. It is so far from the railway station. So answer is the Babarpur forest. Okay, continue with that. Agra Fort or Taj Mahal, which are nearer to the railway line, Agra Fort or Taj Mahal? See in the map, Agra Fort are here and second is Taj Mahal, which are नियरर टू द रेलवे लाइन. ये दोनों में से कौन है जो रेलवे लाइन से नज़दीक है? आगरा फोर्ट, राइट, बिकॉज द आगरा फोर्ट डिस्टेंस इज like that or Taj Mahal distance is like that. Bigger line is a Taj Mahal and shorter line is a Agra Fort. So Agra Fort is a nearer, right? So from the map we are see that Agra Fort is a nearer to the railway line. Next is which is a closer to the river Yamuna. Yamuna river से कौन सी चीज़ है जो नज़दीक है, right? We are see that ताजमहल और द रेलवे स्टेशन. यमुना रिवर से कौन सा है जो नज़दीक है? ताजमहल और रेलवे स्टेशन. ताजमहल आर हियर एंड रेलवे स्टेशन आर हियर. विच आर क्लोज़र टू रिवर यमुना. इसमें से कौन है जो यमुना रिवर से नज़दीक है? डेफिनेटली ताजमहल. ताजमहल आर हियर, सो इट इज़ so nearer to the Yamuna river and railway station are here. It is so far from the river. So answer is the Taj Mahal. Okay, clear. Continue with that. Next is that match the correct length. See, one side match the correct length. One side given the figure with the name and second side is given the measurement. First is length of an earthworm, height of a child, width of a fingernail, length of a sari and distance from home to school. Second side here given that 2 kilometer, 5 meter, 10 centimeter, 1 centimeter and 1 meter. First of all, length of an earthworm. Earthworm is a measure in 2 kilometer, 5 meter, 10 centimeter, 1 centimeter or 1 meter. We see the answer is that earthworm length measure in a centimeter, right? So earthworm length is a 10 centimeters. Second is height of a child. Height of a child is a measure in 2 kilometer, 5 meter, 1 centimeter या 1 meter. Answer is here that 1 meter. Height of a child is a 1 meter. Width of a finger nail. Width of a finger nail. Finger nail की width किस में होगी? 2 kilometer, 5 meter या 1 centimeter. All of you know that 1 centimeter, right? Length of a sari, anybody guess that 2 kilometer या 5 meter? Yes, 5 meter, right? So length of a sari is 5 meter. The last one is distance from home to school. Of course measure in kilometer. Distance from home to school. You also guess your home to school distance also measure in kilometer, not in meter, right? Because your house is far from the school, so distance is a measure in kilometer. I hope this type of a matching all of you clear. Okay, continue with that. Last one is that the long tail competition. One of the short story again. The animals in this picture had a competition. यहाँ पे पिक्चर में जो एनिमल्स दिख रहा है उन लोगों के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन, राइट? वन ऑफ द एलिफेंट, वन ऑफ द लिजर्ड एंड रैट एंड काउ एंड पिग एंड लास्ट वन इज मंकी, राइट? दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर you can see here. The animal who had the longest tail won a prize. ये एनिमल में जिसकी भी टेल सबसे लंबी है उसको प्राइज मिलेगा, राइट? नाउ who do you think won the first prize? कौन सोच रहा है कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगी? एंड who won the second? और कौन सेकेंड प्राइज चाहता है, राइट? जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल. मीन्स गेस करो कि इसमें से किसकी टेल की लेंथ ज़्यादा है. वो
फर्स्ट प्राइज विनर होगा, देन सेकेंड लेंथ जिसकी ज़्यादा है वो सेकेंड प्राइज विनर होगा, राइट। हियर यू कैन सी दैट द लेंथ ऑफ द टेल इज अ काउ. Cow's tail's length is also bigger, and here monkey's tail length is also bigger, right. Pig, rat and elephant's tail length is shorter, right. So here are a monkey, you can see that monkey's tail length and monkey's tail length and cow tail length both are longer, right. So answer here is that monkey won the first prize, and here see monkey's tail length is bigger, so monkey won the first prize and the cow won the second prize, right. cow को second मिलेगा और first prize is won by monkey, right. so longest tail is about 1 meter long. उन लोगों की tail की जो length है वो approximately कितनी लंबी होगी, 1 meter long, right. so longest tail of them is 1 meter long. Okay, today's we are completed the session 4, last session of the unit 4, long and short. I hope all of you clear about the unit 4, long and short, clearly the concept of all the centimeters and meters, right. so thank you.